हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनास चैनल। आज मैं स्टैंडर्ड 7 का न्यू बुक से पार्ट 1 पहला सेकंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग वेदर स्टार्ट कर रही हूँ। वेदर क्या होता है पहले समझना जरूरी है। वेदर मीन्स जब जैसे क्लाइमेट हमारा सनी है, सैंडी है, तो वो रिलेटेड उसे कहते हैं हमारा वेदर। जब हम वेदर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है, अ चेंज इन द वेदर इज सफिशिएंट टू क्रिएट द वर्ल्ड एंड वननेस न्यू। यहाँ पे अगर हम देखें तो वेदर अभी फिलहाल हमारा जो वेदर है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में हमें बहुत ठंड लग रही है, दोपहर में हमें बहुत जबरदस्त एक्सेसिव गर्म लग रहा है, और इवनिंग में अगेन उसको थोड़ा ठंडक ठंडक रात को वापस गर्मी लग रही है। तो ये वेदर हमारा बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस, जो मैं तुम्हें आपको आगे बताऊंगी। हाउ डू वेदर predictions help us prepare for events like heavy rain, storm, drought and heat waves। ये इसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है वेदर एंड इट्स एलिमेंट। तो हम जैसे मैंने आपको बताया वेदर के बारे में, तो व्हाट इज द वेदर? तो वेदर इज द स्टेट of the earth atmosphere at a particular time and place, but what is the atmosphere? तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। व्हाट इज द एटमॉस्फेयर? सिंपल वे में एटमॉस्फेयर एक लेयर होती है डिफरेंट गैसेस की जो सराउंडेड होती है अर्थ के। इट इज लाइक अ केक विद डिफरेंट लेयर्स। ओके, सिंपल वे में अगर आपको मैं समझाऊं, जैसे मैंने अभी आपको बोला, तो वो होता है वेदर। अब यहाँ पे वेदर में तो लेट्स स्टार्ट। अर्थ एटमॉस्फेयर में बी कंपेयर्ड टू अ केक। जैसे मैंने बोला, द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या है? अर्थ के बिल्कुल क्लोजेस्ट सरफेस है, and that is where all land-based plants and animals, including human, live and breathe. It is also where almost all weather phenomena, which we will explore in this chapter. Chalo. Now, troposphere extend to a height. You need to write this, okay, about troposphere कि इसका जो height है extend होती है 6 से 18 किलोमीटर ग्राउंड से, और ये बहुत लेस थिक होता है पोल्स पे, where the cold air contract and the thicker in the tropical zone where the warmer air expand, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। We use many words to describe the weather: hot, cold, rainy, sandy, snowy, windy, coldy, humid. They describe the different ways in which we experience the element of weather. Please do make it ये लिख लेना as a note, elements of the weather. Now here, elements of the weather are temperature. टेम्परेचर जैसे कितना गर्म है, कितना ठंडा है। प्रेसिपिटेशन, ये एक किस्म का फॉर्म ऑफ वाटर है, जैसे रेन, स्नो शीट, हेल फॉल फ्रॉम द स्काई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें वेट ऑफ द एयर होता है जो फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस। विंड क्या है? द मूवमेंट ऑफ द एयर इंक्लूडिंग स्पीड और डायरेक्शन। ह्यूमिडिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। अगर आपको ह्यूमिडिटी ऐसे भी चेक करना हो ना, तो वेरी इजी। अगर आप जैसे आप बैठे हो और आपके चिन की तरफ देखिए, आपके चिन को टच कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना आपको पसीना हो रहा है, ऑयलीनेस वो लग रहा है आपको। नाउ हियर द स्पीड का डेफिनेशन, हेल का डेफिनेशन और वाटर वेपर का दिया हुआ है। प्लीज डू राइट इन योर नोटबुक। जैसे हमने ट्रोपोस्फियर के बारे में बात किया था आपसे, वैसे ही हमारे पास है जो दूसरी जो लेयर्स है अर्थ की, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है और एक्सोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर हमारा 16 टू 50 किलोमीटर्स होता है, मेसोस्फियर हमारा 50 टू 80 होता है, थर्मोस्फियर 80 टू 700 किलोमीटर होता है, और एक्सोस्फियर जो होता है वो 700 टू 10,000 किलोमीटर होता है। और उसके बीच में थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर के बीच में हमारा आता है ओजोन लेयर। ठीक है, अभी ये जो चीजें हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फियर है, तो यहाँ पे हमारे जो पैराशूट वगैरह है, ये सब कुछ चलते हैं।
इस चैप्टर में वी हैव टू फोकस ऑन ट्रोपोस्फियर, हमें ट्रोपोस्फियर पर ज्यादा फोकस करना है। द रीजन इज ट्रोपोस्फियर इज अ प्लेस जहाँ पे सारे फिनोमेना होते हैं वेदर के, और क्योंकि चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग वेदर, सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट। इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न, तो एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आप लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अगर नहीं याद कर पा रहे हो, तो बेस्ट थिंग है याद करने के लिए, राइट डाउन, जैसे टी है, टी फॉर ट्रोपोस्फियर का टी का, टी इज फॉर टुडे, स्ट्रेटोस्फियर का एस है सृष्टि, मेसोस्फियर का एम है मैडम, टी जो है थर्मोस्फियर का डॉट, और ई जो एक्सोस्फियर का है एनवायरनमेंट। सो टुडे सृष्टि मैम डॉट एनवायरनमेंट, इजंट इट इजी? ये आपको याद भी रहेगा अच्छे से, and it is more for example comfortable for us to remember. Now, troposphere के बारे में one more thing. So first of all, we know that the layer closest to the Earth's surface is known as the troposphere. और ये include करता है animal, human, and breed. Almost all the weather event happen here. The troposphere stretches from 6 to 18 kilometers above ground. It is thinner at the pole. Because troposphere is very close, तो यह हम है, एनिमल्स है, सब है, हम सब यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में ही रहते हैं। That you should be. An important point which you need to learn about, देखो here what it is written कि it stretched to 16 to 18 kilometers ground से, ठीक है। और यहाँ पे एक जो पॉइंट है, इट इज थिनर इन द ट्रॉपिकल जोन, मतलब इक्वेटर के पास वो मोटा होता है, और फिर पोल्स के पास, ठीक है, एंड देन फिर वो पतला हो जाता है लेयर्स पे, ट्रॉपिकल जोन पे। अब मैंने जब आपको एलिमेंट ऑफ वेदर बताया, तो एलिमेंट ऑफ वेदर को याद करने का एक और सबसे अच्छा तरीका है, क्या है? तो टी से है तेरे, पी से है पापा, एटमॉस्फेयर से ए आके, ह्यूमिडिटी से है होम, और विंड से है वर्क करेंगे। तो हम कर सकते, याद कर सकते हैं तेरे पापा आपके होम होमवर्क करेंगे, ठीक है। दिस ऑल्सो गुड। अब नेक्स्ट इज ओके, नाउ स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पे देखो, द बेस्ट एग्जाम्पल व्हाट दे हैव गिवन इज किस तरीके से हम ह्यूमन ऑब्जर्व करते थे नेचर को, ठीक है। हमें कैसे सिग्नल मिलते थे फोरकास्ट के वेदर के लिए, तो ऑब्जर्विंग बर्ड्स फ्लाइंग ब्लू, एंड कैरिंग एग्स, squirrel gathering nuts, frogs croaking loudly, or even the opening and the closing of a pine cones. So, इससे what happened? The knowledge has been passed through from generation to generation. And now, observing the nature, see, which I told you right now about this all. Now, in the last few centuries, scientists have worked out methods to measure and monitor. We have lots of elements now, tools we have, कि जिससे हम measure कर सकते हैं, हमारा thermometer वगैरह, जो हम उसके बेस पे हमको पता चलता है कि टेम्परेचर क्या है, based on that input. See, now here, what are they telling to us? In the last few centuries, scientists have worked out methods to measure, monitor the element of the weather with great precision. Based on those input, meteorologists try to predict how the weather will behave in a particular region after hours, week, वैसे जैसे हम we also feel like that ना. Even what you do is, देखो एक best example I'll tell you. You keep your notebook इन योर विंडो, और आपको नोटबुक पे पेंसिल से एक डॉट बनाओ, पेंसिल को ऐसे स्टैंड करो। जब आप पेंसिल को होल्ड करोगे, ऊपर से होल्ड करो उसको, जहां पे भी पेंसिल का शेडो दिखता है ना, दैट इज योर नॉर्थ पोल। Very easy way to identify the direction also. But because here measurement like different types of thermometer used by measuring, clinical thermometer, laboratory thermometer, है ना, जिसमें हम सेल्सियस स्केल पे, फ़ारेनहाइट स्केल पे उसको ऑब्जर्व करते हैं। See here, now you can see a snow melt quickly due to the snowy
uh, sunny day, cloudy weather. This all you should be knowing the term. See, in winter coconut oil turns solid. होता है ना, आप वो हेयर ऑयल निकाल नहीं पाते हम. Curd takes longer to set in cold weather. अब here we are going to talk about, see, ambient का temp यहाँ पे दिया है of the immediate surrounding. So here what I was saying about, there are several types of the thermometer which अभी मैंने आप लोगों को बताया और जिसके थ्रू मैंने आपको बताया कि किस तरीके से in need temperature recording can be used to collect some useful statistics including जैसे range of temperature, maximum temperature minus the minimum temperature during the particular period of time 24 hours में mean daily temperature or a maximum temperature plus the minimum temperature of the day divided into 2. So this all we see. Can you see here? Satyame, Sat, Jayade, Adityat, Jayade, Vishti means from the sun arise rain. The phrase comes from the ancient. Please do write in your notebook. The Indian Meteorological Department was set up in 1857 and its motto, which I told you right now, and from where they have taken the words, that also you can see. From the sun arise rain, from the rain comes from food and from food living beings originate. ये साइकिल जो हमारे इको सिस्टम की चलती आई है, that they are. Here you can see date. देखो, अगर for an example, if I tell you that on every day when you go home, okay, you go home at 3 o'clock, 2 o'clock from the school, that time go and see the temperature. Temperature you can see right now from the watch, from your mobile phone. So many things are there that you can see the temperature. So every day, a week का temperature please measure करके रखो. You will come to know how many degree the temperature Celsius was. Okay. Now let's talk about the precipitation. If the news says that a particular place receives 30 meters of rainfall in a day, what does it mean? How is the rainfall measured? So can you see this rain gauge? In this measuring tube you could see, measuring scale you could see, collecting funnel you can see, right? Here the amount of rainfall measured with the help of an instrument called a rain gauge. Children, please we need to write a brief note on the rain gauge. When it rains, the water falls into a funnel, which you can see, and it collected in the cylindrical. A scale is attached to the cylindrical to measure the depth of the rainfall collected. For example, when height of the water collected 5 mm, we say that the area received 5 millimeter of rainfall. Okay, same thing is over here in now atmospheric pressure. Atmospheric pressure, our bodies are quite aware of temperature and rainfall. But you may also have an experience that the weather sometimes feels heavy, as before a thunderstorm. This is related to atmospheric pressure, which is pressure exerted by the weight of the air about the around us. Now you can see the atmospheric pressure is higher near the sea coast. Lower we go, higher up the mountain. When you climb a mountain, the air gets thinner, पतली होती जाती है, and then you face a problem. You are not able to breathe. Easy नहीं होता हमें oxygen वो करना. So see, look here. This is very important image of 2.7. जितने height पे आप रहते हो, जो air है वो cool होती जाती है, पर low pressure. और जितनी नीचे आप रहते हो उतना हाई प्रेशर वार्म एयर होती है. Now, where your lungs to take with less oxygen getting into your blood, your body has to work harder to keep you moving. That's why people sometimes feel breathless, dizzy or tired at high altitude. जितने हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं उतना हमें ब्रीदिंग में इश्यू होती है बिकॉज जो हमारी एयर है वो एकदम थिन हो जाती है, पतली हो जाती है. This does not mean that the atmospheric pressure is always high in a place below or the coast. In fact, it sometimes drops dramatically, resulting in what meteorologists call a depression or a low pressure system. तो अब आपको पता चला low pressure system कैसे कहते हैं. Very good. Now here we are introducing a barometer, millibar. Chalo, let's see. We need to define the terms. The instrument used to measure the atmospheric pressure is called a barometer.
As with thermometer, there are several types of barometers. The unit they display in generally the millibar, abbreviated as MB. The normal atmosphere pressure at the sea coast is around 1013 MB. A pressure below 1000 MB indicates a depression. So you came to know about it. Accidematize, please write down about it. Adjust to a new planet. Here they have given a picture of Darungla top, highest motorable road in the world. Okay, over here people who journey to place at a high altitude are advised to make pause on the way to allow the body to acclimatize. Our army personnel serves in high altitude place like Gardung in Ladakh. Now we are learning about the wind. The wind is the what is wind? A movement of a air from area of high pressure or low pressure. Speed, direction are two important factors when we describe wind. Now you could see here, I received like this, flying in the wind. Very good. Now the wind is an important element of weather. Its direction and speed help in weather forecasting. Besides, air pilot and sailor need to be aware of wind data, as the wind has a great influence on firing, flying, or sailing. Farmers also use the wind direction to predict where rain might come from. Also, greater wind speed will cause the soil to dry faster. So these are very important things. Can you see here a wind vane on the tarmac and right में है anemometer. Now define this wind vane on a tarmac is called a wind sock. You should be aware of. It gives pilot an indication of a direction of the wind during takeoff and landing. Similar, socks are used in industries that release ash or gases. Simplest instrument to measure wind direction and speed is anemometer. तो तुमको पता होना चाहिए. In it has three or four metal cups that rotate on a vertical shape. When the wind blows, the stronger the wind, the faster the rotation. Okay. Humidity. So humidity is the last element of weather on our list. It refers to the amount of water vapor pressure in the air. It also depends on factors like temperature, wind, pressure, and location. Now we'll learn about, just a minute, I'm scrolling it. Okay, we'll learn about humidity of the air is measured as relative humidity. Air that would contain absolutely no water vapor, which is impossible to natural condition. This rated at 0%, while air saturated with water vapor will have a humidity of 100%. In practice, dry weather has a relative humidity range between 20% and 40%, while humid weather usually falls between 60 to 80 relatively humid. Now we'll learn about the weather station. As you can see, we need several instruments to measure the weather at a particular place and type of weather station brings all the information together, making it easier to measure the and for keeping the track. An automatic weather station, automated weather station (AWS) is a self-operating system that values various sensors of uh, measure and record weather data such as temperature. Then we go Then we will learn about in 2023 national disaster. Can you see here?
Write it in the notebook. Predicting the weather. Meteorologists collect data using this instrument over long period of time. They study the data and use scientific methods to try and predict the weather. Such predictions are very important nowadays. Here you see the map. See the fog. They have put they mark it. Heavy rain, and then these are the subdivision colors which you can put it in your map and stick in the notebook. Now we will talk about, let's explore, discuss in a pair different situations in which weather prediction are helpful. Make a uh, list, and after you completed it, share it and discuss it. Okay. So I hope you must have understood. Update and upgrade yourself till that. Bye.